Let us start once again because I have some connection issue. The load shedding is there, so if there is a load shedding, then my connection will be lost. Okay, so let us start once again. So I have to do it fast because the weather is not well enough. So let us start. Surjo, I will start the session again from the beginning. Okay, okay. So already I have told you where was ওখান I. থেকে তো নেক্সট ক্লাস আছে। Where was I? Already I have told. So সায়রদের কার ক্লাস আছে? স্যার হ্যাঁ, কোন স্যার? सर तो सोमक सर का সোমক সোমক Okay, I will tell Somok to delay it by 10 minutes. Okay. ओके सर। One second. So then 1 second. I will call Somok and tell him. Okay. Mm, okay. So let us continue. Still Somok sir taking the phone. Okay. So as well as they are in the combustion of uh, in the in the com in the combustion of the compressing engine, and I was telling the factor that affects the delay period, right? সৌম্যক তুমি একটু 15 মিনিট পর থেকে ক্লাস নিও, হ্যাঁ? আমি এটা আমার কানেকশন চলে গেছিল, ঠিক আছে? হুম। এই 11:15 11:50 এরকম করে, এই 11:15 সরি। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক ঠিক আছে ঠিক আছে, আমি এটা করে নিয়ে তোমাকে ফোন করছি, ঠিক বলে দিচ্ছি, ঠিক আছে? Okay, so I've told Somok sir. Now let us continue, and I will go fast because I have 15 to 20 minutes time. Okay, so let us start. So already I have completed the compression ratio, engine speed, output, how this thing affect the delay period. Now I will move on to the factor that will affect that atomization of the fuel and the duration of the injections. So already I have told what is the effect of atomization of fuel and duration of the injection. Still I am telling you for your recapitulation कि अगर फ्यूल का जो इंजेक्शन प्रेशर है वो अगर इंक्रीज करता है तो फ्यूल का जो स्प्रे पैटर्न होगा वो बहुत फाइन होगा, ठीक है? अगर स्प्रे पैटर्न अच्छा है सो द फाइननेस ऑफ द एटमाइजेशन मतलब द डिग्री ऑफ द एटमाइजेशन होगा वो बहुत अच्छा होगा। अगर डिग्री ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा है मतलब उसका जो इग्निशन डिले पीरियड है वो घट जाएगा। So that is the effect of higher injection pressure of the fuel. So at the same time, if the duration of the injection is more, that means more fuel is coming at the same time the more fuel is coming, that only indicates there is a increment of the delay period. So अगर duration of the injection fuel ज्यादा हो गया तो delay period ज्यादा हो जाएगा। Okay, next is the quality of the fuel. Quality of the fuel मतलब the self ignition temperature. Quality is related to this combustion ignition engine fuel is the self ignition temperature. अगर fuel का self ignition temperature कम है मतलब कम temperature में अगर combustion chamber का temperature कम भी है तो the fuel will burn. That means अगर self ignition temperature कम है तो fuel will reduce the delay period. अगर ज्यादा है so
the fuel will increase the delay period because उसको ज़्यादा time लगेगा that temperature to reach that temperature when the fuel will self ignite, right? So it depends upon several things such as volatility, latent heat, viscosity, surface tension, all these things. So these are the quality of the fuel, and this is the quality of the fuel is categorized by means of certain number in compression ignition engine. Next, come to the inlet temperature and the pressure. So already I have told what is the effect of the compression ratio. कंप्रेशन रेशियो का इफेक्ट होता है कि इनलेट टेम्परेचर और प्रेशर को ज्यादा कर देता है. सो अगर इनलेट टेम्परेचर और प्रेशर ज्यादा हो गया मतलब इट विल टेक अ लेसर टाइम टू इग्नाइट. मतलब जो फ्यूल इम्पिंज होगा इनसाइड द कंबशन चेम्बर दैट विल टेक द लेसर टाइम टू इग्नाइट. ओके, सो दैट्स व्हाई इफ द इग्निशन टेम्परेचर एंड द प्रेशर इज लेस, तो मतलब यही है कि जो टाइम लगेगा जो जो टाइम लगेगा फॉर द प्रिपरेशन इट विल बी रिड्यूस. दैट मींस द इग्निशन डिले पीरियड will be reduced if the intake temperature and the pressure is higher. So if it is lower, so it will take more time. That means the delay period will increase. Okay, so these are the factors that affects the delay period. Now come to the abnormal combustion and knocking. Okay, so this knocking phenomenon and the knocking effect is similar to the spark ignition engine, but the procedure of this abnormal combustion is little bit different because in the spark ignition engine I will tell this abnormal combustion or knocking of the CI engine with respect to spark ignition engine. दोनों को कंपेयर करेंगे एंड उस हिसाब से हम बोलेंगे बिकॉज एबनॉर्मल कंबशन नॉकिंग का फंडा जो है वो तुम लोगों को पता है कि इट इज that type of combustion which will reduce the efficiency, which will reduce the effectiveness of the main fuel burning or the main heat releasing rate, okay, or main pressure increasing rate. So जो ऐसा इंजन का fuel है ऑलमोस्ट सेम है, जो एबनॉर्मल कंबशन है ऑलमोस्ट सेम है सीआई इंजन का कंबशन, लेकिन दोनों को जो तरीका है वो डिफरेंट है. ठीक है, दोनों को जो टाइमिंग है वो डिफरेंट है. तो कैसे कैसे होता है, सो लेट मी टेल यू. तो स्पार्क इग्निशन इंजन में क्या होता है, स्पार्क इग्निशन इंजन में होता है कि एक फ्लेम फ्रंट रहता है और दूसरे टाइप से एक फ्लेम फ्रंट आके कोलाइड करता है. तो एक टाइप से एक फ्लेम फ्रंट आ रहा है, दूसरा टाइप पे एबनॉर्मल कंबशन में कोई हॉटस्पॉट आ गया दैट इज एक्टिंग लाइक एन आर्टिफिशियल स्पार्क प्लग. और आर्टिफिशियल स्पार्क प्लग अगर दूसरा साइड पे है, कंबशन पेपर अगर दूसरा साइड पे है, मतलब दैट विल कम एंड दैट विल मेक द फ्यूल इग्नाइटेड. ओके, अगर फ्यूल दूसरा साइड से भी इग्नाइट होगा क्योंकि दिस इज होमोजीनियस मिक्सचर, अगर मिक्सचर होमोजीनियस है तो दूसरा साइड से भी अगर कोई हॉटस्पॉट आ गया, आर्टिफिशियल स्पार्क प्लग आ गया, so it will burn the fuel, it will ignite the fuel, and that fuel will come in contact, and here the main flame is coming like this way and which is eating the next layer of fuel, and on the opposite side the another fuel layer is coming. So whenever these two will come, this will collide and this will make a pressure pulse. That is the combustion, abnormal combustion of the spark ignition engine. But compression ignition engine is a little bit different. ये क्या होता है, अगर फ्यूल का जो इंजेक्शन पीरियड है वो ज्यादा हो गया, मतलब जो डिले पीरियड अगर ज्यादा हो गया, मतलब large amount of the fuel is accumulated inside the chamber. Okay, so जो uncontrolled combustion होगा, जो uncontrolled combustion होगा, तो उसको वो मतलब जस्ट लाइक एन एक्सप्लोशन, मतलब ज्यादा फ्यूल अंदर आ गया एंड इट विल गेट टाइम टू इग्नाइट, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर में पहुंच गया, सो हर तरफ से it will explode, so we'll get the explosion and there will be a certain pressure rise and we'll get and the ultimate pressure will reach before, जब पहुंचना चाहिए था, जो अल्टीमेट प्रेशर राइज है जब उसको होना चाहिए था, मतलब टीटीसी का करीब होना चाहिए था, वो उससे पहले आ जाता है. ठीक है, so that is not desirable and that makes the combustion chamber as well as the engine a noisy sound because the pressure pulse is generating, because from the several time there is a explosion, because ये अगर फ्यूल को ज्यादा टाइम मिलता है, अगर फ्यूल का इंजेक्शन पीरियड ज्यादा है, सो वो पूरा चेंबर में फैल जाएगा एंड पूरा चेंबर में फैल गया तो इट विल कम इन कांटेक्ट विद द ऑक्सीजन एंड इफ इसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ठीक ठाक है, so each and every point there will be explosion and the uncontrolled combustion will like a bomb. The uncontrolled combustion time जो होगा that like a bomb, so there will be a certain variation in the pressure that will make the pressure pulse. ओके, सो ये होता है जस्ट इग्निशन डिले पीरियड खत्म हुआ फिर उसके बाद से स्टार्ट हो गया, जस्ट इग्निशन डिले पीरियड खत्म हुआ फिर उसके बाद स्टार्ट हो गया एंड द प्रेशर राइज, the maximum pressure of the of the cycle
comes very fast because of this abnormal combustion or the knocking, right? And this is, and what is the effect of this? And the effect of this is that there is an internal combustion engine which is equivalent to the sudden increase in the load on the engine because of this explosion, because of this explosion. मतलब अगर फ्यूल को ज्यादा टाइम मिलता है so वो पूरा चेंबर तक फैल जाएगा पूरा, and it will come in contact with the oxygen, and from the several points it will make an explosion during the uncontrolled combustions. तो several portion से इसका एक प्रेशर पल्स आ रहा है, ठीक है? सो अगर several portion से इसका प्रेशर पल्स आ रहा है, that means it makes an abnormal combustion or knocking. Okay, so that pressure pulse will go to the cylinder wall and it will make the vibration which will cause a noisy situation. Okay, and this is known as the abnormal combustion or knocking. So abnormal combustion or knocking को हम उसके पहले हम देख लेते हैं कि knocking का comparison with respect to this pressure versus theta diagram, P theta diagram. So as I have told, the procedure and the timing of the SI engine combustion, abnormal combustion, and CI engine combustion is different. Look at over there. So here the sparking starts. Here the sparking starts. Here the ignition delay period completed. So this is a longer ignition delay period which is desirable. But if the delay period is short, if the delay period is short, then I have told that the artificial spark plug will come into the picture and it will make the fuel burn. तो दूसरा साइड से भी फ्यूल आना, दूसरा साइड से भी एक फ्यूल का जो फ्लेम आना शुरू हो जाएगा जो मेन फ्लेम पॉइंट से टकराएगा, एंड कब? वो मेन मेन पीक प्रेशर पे पहुंच जाने के बाद। सो मेन पीक प्रेशर के पहुंच जाने के बाद जब उसका प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तभी दूसरे साइड से एक फ्लेम फ्रंट आके उसको अटैक कर रहा है। अगर उसका अटैक कर दिया मतलब दोनों में एक संगत हो रहा है, मतलब इट विल कोलाइड विद ईच अदर एंड it will make the pressure pulse like this. So a pressure pulse will be generated, and this is generated after the peak pressure reaches. So this is for SI engine. But for ignition engine, I have told that as soon as the ignition delay period completed, during the time of uncontrolled combustion, the fuel in come in contact with the air because because of the longer delay period, the fuel has been accumulated throughout, the fuel is spreaded throughout the combustion chamber, it come in contact with the oxygen and it make the explosion from different sides. And as it's a different side, that means from the different side the pressure is coming, the pressure pulse is coming, and each and every one is colliding with each other. That means we will get a pressure pulse. Okay, just like this. That means ignition delay period खत्म हो गया एंड हम लोगों का जो एबनॉर्मल कंबशन है, जो वेरिएशन इन द प्रेशर है, जो प्रेशर पल्स है, वो जनरेशन वो स्टार्ट हो गया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ uncontrolled combustion. And you can see during the time of uncontrolled combustion, very early the peak pressure reaches the combustion, the product, very early the peak pressure reaches. So if we see the comparison, then the abnormal combustion happens or the pressure pulse generated in SI engine after the peak pressure reaches, and in CI engine it is before the peak pressure reaches. So there is a timing, and there is a difference between the timing and the procedure of this SI engine and compression ignition engine. So this is all about the SI engine and CI engine combustions abnormal. So I have completed, but before going to that, before completing that, I will tell you, I will given you a look at over there that what are the characteristics to reduce the detonation or knock. So there is a table I have provided. So look at over there. So first one come. So if the ignition temperature of the fuel, it should be high for SI engine, it should be low for कंप्रेशन इंजन। मतलब जो ऑटो इग्निशन टेम्परेचर होगा वो एसआई इंजन के लिए ज्यादा होगा, कंप्रेशन इंजन के लिए कम होगा। इग्निशन डिले, द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज इग्निशन डिले। तो इसके ऊपर ही डिपेंड करता है पूरा चीज, व्हाट इज द इग्निशन डिले। सो फॉर एसआई इंजन इट इज लॉन्ग, फॉर सीआई इंजन इट इज शॉर्ट होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को जो डिटोनेशन है उसको रिड्यूस करना है। कंप्रेशन रेशियो ऑलरेडी आई हैव टोल्ड, एसआई इंजन के लिए लो होगा ऑलमोस्ट 8 to 10, कंप्रेशन इंजन हाई होगा 18 to 23।
इनलेट टेम्परेचर प्रेशर एसआई इंजन के लिए लो होगा और सीआई इंजन के लिए हाई होगा। कंबसन जो वाल का जो चेम्बर है ये एसआई इंजन के लिए लो होना चाहिए, क्योंकि if the combustion wall temperature is high, then it will act like a hotspot, is like a hotspot, and hotspot will act like a artificial spark plug। अभी तो हॉटस्पॉट का बात चल रहा है, कोरोना का टाइम है तो हॉटस्पॉट का बात चल रहा है, लेकिन द हॉटस्पॉट इज हियर आल्सो। हॉटस्पॉट मतलब जो जिधर जिधर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, दैट इज नोन एज द हॉटस्पॉट। सो वी यूज द टर्म हॉटस्पॉट इन थर्मल इमेजिंग, मतलब जिधर कंसंट्रेशन टेम्परेचर का ज्यादा है, दैट इज नोन एज द hotspot, and because of this hotspot the temperature is high and it will act like an artificial spark plug। सो ये ऐसे इंजन के लिए कम होना चाहिए, कंबसन का वर्ल्ड का जो टेम्परेचर है वो कम होना चाहिए, और जो सीआई इंजन का है वो ज्यादा होना चाहिए। स्पीड और आरपीएम ऐसे इंजन के लिए ज्यादा होना चाहिए, सीआई इंजन के लिए कम होना चाहिए। एंड सिलेंडर साइज ऐसे इंजन के लिए स्मॉल होना चाहिए, सीआई इंजन के लिए ज्यादा होना चाहिए। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड व्हाई, ठीक है। ये स्मॉल होना चाहिए बिकॉज द फ्लेम हैव टू ट्रैवल द शॉर्टर डिस्टेंस फॉर एसआई इंजन, एंड फॉर सीआई इंजन द फ्यूल शुड नॉट एक्यूमुलेट थ्रू आउट द कंबसन चेंबर। अगर पूरा कंबसन चेंबर में फैल गया मतलब वो ऑक्सीजन के करीब आ जाएगा एंड इट विल मेक एन एब्नॉर्मल कंबसन। So these are the characteristics to reduce the detonation or knock। Okay, so with this I am completing the SI engine lecture। Okay, the combustion lecture for both the SI engine and CI engine। So if you have any question then you can ask me। Okay, so if you have any question then you can ask me। Okay, so any question? सर आई हैव हाँ वन बोल क्वेश्चन। बोल। इग्निशन डिले एसआई इंजन में अगर शॉर्ट होता है हाँ तो क्या होगा? वो तो यहाँ पे एबनॉर्मल लिखा है कंबशन होगा, एबनॉर्मल कंबशन होगा, एबनॉर्मल बट कंबशन होगा। इग्निशन डिले लॉन्ग होता है तो आप जैसे बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन ऑफ फ्यूल ज्यादा होता है सीआई इंजन के लिए, तो सीआई इंजन के लिए, दैट इज फॉर सीआई में इंजन, ज्यादा होगा। ओके, दैट उसमें इज फॉर सीआई सीआई इंजन। बोथ आर डिफरेंट, इंजन। बोथ का जो एबनॉर्मल कंबशन का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो डिफरेंट है। सीआई इंजन के लिए जो डिले पीरियड है वो शॉर्ट होगा, एसआई इंजन के लिए जो डिले पीरियड है वो ज्यादा होगा, ठीक है। सो इफ यू हैव टाइम देन आई विल शो यू वन वीडियो। ओके, सो जस्ट Okay, कीप sir. पेशेंस, आई विल शो यू वन वीडियो, वन सेकंड। Okay, I hope you are able to see the video, right? Yes, sir. So just see the video how the regular combustion and abnormal combustion is happening. So this is for your regular combustion is SI engine. So it will be shown for SI engine only. Okay, 4 minutes video. Just watch it. Huh? So here the fuel is injected, right? Mm. ये है नॉकिंग अभी। हाँ, कैसे होता है देख लो। Okay. So these are the carbon deposit. Look it over there. It is like an artificial spark plug.
देखा कैसे ये आर्टिफिशियल स्पार्क प्लग की तरह काम कर रहा है। So this is the temperature of the combustion wall. अगर combustion temperature को wall का temperature ज्यादा है, so it will also act like a spark plug. Okay. Okay. So thank you. So I have completed this combustion chapter. So next day I will start from carburetor. Okay. Thank you. Okay, sir. Okay, sir. Thank you. Thank you, sir. Sir.